Grateful, sir. Grateful. Honorable members, I have received 22 notices on the subject to discuss on the situation arising out of irregularities, cheating, and paper leakage in the National Eligibility Cum Entrance Examination NEET 2024 conducted by National Testing Agency NTA. Honorable members, Honorable Rashtrapati Ji, in her address delivered yesterday to the members of both the houses assembled together had, in paragraph 20, inter alia indicated that there would be a fair investigation, ensuring strict punishment to the culprits, and that the government is working towards major reforms in examination-related bodies, their functioning, and all aspects of the examination process. One second, take your seat. Would you care to read para 20? It is not good to rise suddenly. I have gone through it and read para 20. Read para 20, please. There is express reflection therein. Honorable members, the discussion on the motion of thanks on the Honorable President's address will be initiated in the House today. Thus, all honorable members will have ample, adequate opportunity to put forth their views in the matter. Under these circumstances, I am constrained not to accept these notices under Rule 267. Papers to be laid on the table. Please. Mr. Sakti Singh, all of you please sit down. A member is raising point of order. I think it is time we really exemplify decorum. I am here to afford opportunity to every member, and every member is expressing to the entire country. Yes, Mr. Pramod Tiwari, your point of order. Please kindly read 267 of the notebook. कोई सदस्य सभापति की सहमत से यह प्रस्ताव कर सकेगा कि उस दिन राज्यसभा के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाए, और यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। जी, प्लीज फॉर्मुलेट योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, आई एम फॉर्मुलेटिंग। यस, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर? मैंने आपके सामने रख दिया है 267 क्या कहता है। उसके अनुसार मेरी भी नोटिस है, एलओपी की भी नोटिस है, तमाम दलों के नेताओं की भी नोटिस है। सर, हम लोगों का भी अनुभव इस सदन में है, थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं जितना बड़े लोगों का है। गलत करें आप, गलत करें। आपका अनुभव दशकों तक का है। तो हमारी बात मान जाइए फिर। नहीं, इसलिए नहीं कि जब एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ द हाउस रूल को पढ़ता है तो रूल में क्या लिखा है? एनी मेंबर में विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन। सर, नाउ sit down for a minute. सर, लेट मी फिनिश। Sit down, sit down. I got your point. कह तो लेने दें, मुझे कह तो लेने दें सर। कही। And please allow him to speak. सर, तो मैंने जो नियम रखा है आपके सामने, सवाल यहाँ सीधा सा है। हम इस सदन में आते हैं जन समस्याओं को उठाने के लिए। आज 25 लाख युवा सड़कों पर है सर। प्रमोद जी, उसके साथ जुड़े हुए परिवार के करोड़ों लोग। Nothing will go on record now. प्रमोद जी, nothing will go on record. Pramod ji, it is not expected of a leader of your stature to misuse the platform. No, Pramod ji, you are misusing the indulgence accorded. You had to raise a point of order. Now, have my ruling. 267 allows every member of the House to move that any rule may be suspended, that
I have received 22. Please take your seat. Now, why it is with the consent of the chairman? Because the chairman has to apply his mind. If the chairman finds that the matter can be discussed immediately without wait by debate on the president's address, then why raise this? So this cannot happen. Some members met me in my chamber. They raised the issue. I tried to persuade them that, and I gave them an illustration. I told them that if you are taking a flight to Kolkata and the flight is waiting, seats are booked, still you want to argue, let us argue, can I take this flight? The opportunity is available at your door. The next item will be this only. Address of the Honorable President will be debated here. You will get all the opportunity. Please, leader of the opposition. Sir. सर, ये स्पेशल फ्लाइट है कि कब चाहे तब जा सकते हैं। सर, ये स्पेशल फ्लाइट ही वेट कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेंगलोर जाने के लिए स्पेशल फ्लाइट वेट कर रही है ताकि आप वेट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए अभिनंदन कर सके। टाइम वो अगर कभी अपने को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए हम इस बार हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो हैदराबाद के ही है, मैं पूछ के उनको एक्सटेंड कर लूँगा। लेकिन बात यह है, सो 267 क्यों मेंशन किया गया है कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं तब आपके कंसेंट लेकर, आपको मनवा कर, आपके दिल को छूने तक हम ये बात करेंगे। No. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 3, bracket 1 in today's list of business. Thank you, Chairman, sir. Professor S.P. Singh Baghel. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। Honorable members, announcement regarding BSc. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 27 June 2024 has allotted time for government business as follows. Discussion on the motion of thanks on the President's address. 21 hours. Honorable members, these 21 hours have to be utilized for issues you seek to raise. It will be walking away from your constitutional obligations when you can discuss right away. Honorable members, I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons for this session has been reconstituted and the details are as follows.